हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जैन्स क्रिएटिव कॉर्नर। आई एम श्योर कार्ड आइडियाज तो आप ट्राई कर ही रहे हो, बट दिस टाइम आई एम हियर टू शो यू अ वेरी इजी एंड डिलिशियस रेसिपी ऑफ होममेड नूडल्स। भाई चाइना के दिए वायरस से तो दूर रहना है, बट चाइनीज खाने से कौन दूर रह सकता है। मुझे तो 2 महीने हो गए थे स्ट्रीट फूड और बाहर का खाना मिस करते हुए, इसलिए सोचा क्यों ना क्रेविंग शांत की जाए। सो हियर आई एम टू शेयर द रेसिपी विद यू फॉर योर टेस्ट बड्स टू एंजॉय। I'll be telling you this lip-smacking quick recipe of street-style chow mein with the cooking assistance of my bhabhi Ela and sister Pallavi. But before you watch it, please subscribe to my channel and also press the bell icon to get notified for every new video. If you remember, I mentioned in my previous video, I will be giving out shout-outs to the best viewer comments from this video onwards. Watch till the end to know about it. Without wasting a single second, let's start by having a look at the list of ingredients. We need some oil for frying the vegetables. आप जो भी ऑयल नॉर्मल कुकिंग के लिए यूज करते हो वही काम आ जाएगा। For the sauces you need soya sauce, some salad dressing vinegar and green chili sauce. अगर स्पाइसी कम प्रेफर करते हैं तो you can skip it. बाजार वाले सब्जियों में अनियंस, कैबेज और शिमला मिर्च डालते हैं, so we are using that. आप गाजर या बीन्स भी यूज कर सकते हैं। We also need some spring onions for garnishing if available. बस अब मेन चीज रह गई, 150 grams of ready to cook Hakka noodles. First step is to boil the noodles. Boil 10 cups of water in a large pan or a patila till the water starts bubbling. Drop the noodles and boil for about 5 minutes while continuously stirring and breaking the noodles. Add a little salt and 1 spoon of oil to it. आपने बस उतना बॉईल करना है जिसे हम कहते हैं एक दाना कच्चा। हल्का सा अंडर कुक रखेंगे हम नूडल्स को। At this stage, you can strain the noodles and wash them under room temperature water. अब इन नूडल्स को एक खुले बर्तन में फैलाना है और मैरिनेट करना है ऑयल और सोया सॉस से। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और अच्छे से टॉस करेंगे। After mixing everything properly, you need to keep these noodles in the refrigerator for about half an hour. Now, till our noodles are soaking all the flavors of the marination, let's prepare our vegetables. सभी सब्जियों को मोटा मोटा काटना है। फिर एक चाइनीज वॉक या अपनी नॉर्मल कढ़ाई में ऑयल डालना है। ऑयल हैज टू बी poured generously, otherwise the noodles will become sticky. Spread the oil uniformly all over. Once the oil is heated, add the chopped onions, capsicum and cabbage and saute them until they turn light brown. Stir them continuously to avoid sticking to the base or burning of vegetables. After this, you need to add the vinegar, soya sauce and green chili sauce, 1 spoonful each. Add salt and black pepper as per your taste and mix everything really well. Be careful with the salt, we have added it twice before this. You can prepare the vegetables and noodles in advance and keep them separately. जब सर्व करना हो तो उससे 10 मिनट पहले add the marinated noodles to the cooked vegetables and mix them thoroughly with each other. We prefer to use 2 forks for this step. बहुत इजी हो जाता है नूडल्स को मिक्स करना। Otherwise, this is a tough job. You need to keep patience. Once they are evenly mixed, add some spring onions. Save some for garnishing. और बस हो गए रेडी वाले चाउमीन तैयार। बोल में निकाल के स्प्रिंग अनियन से डेकोरेट करो और सीधा ले जाओ टेबल पे। काफी फैंस बनने वाले हैं आज आपके। एंड नाउ फॉर द शाउट आउट्स। द बेस्ट कमेंट्स ऑफ द वीक आर If you like the video, don't forget to subscribe to my channel and please comment down your ideas, thoughts and suggestions. Thank you so much for stopping by. Stay tuned till the next video. Till then, Jai Jinendra.